Hello everyone, मैं BL Sharma, Maths and I will discuss with you in this class the factor theorem and factorization using factor theorem. मैं BL Sharma, Maths हूँ। इस क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा फैक्टर थ्योरम के बारे में और कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम इसके बारे में। और ये क्लास 9 से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। So keep watching. Now questions are on your screen. This is exercise 2.3 and question number 1 is determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. x plus 1 in 1, 2, 3, 4 में किसका फैक्टर है? तो सी फैक्टर होने के लिए जरूरी है कि आपका रिमाइंडर 0 आए। So what we do here, first of all, we find the remainder. So for the question number 1, we write here, we are taking the first part of it. तो से देखिए इसका हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पुट x plus 1 is equal to 0 और x is equal to -1 to get a remainder. So remainder is now in place of this. Wherever जहां भी x है वहां पे आप -1 रिप्लेस करिए x को। तो देखिए रिमाइंडर विल बी -1 power 3 plus -1 power 2 plus -1 plus 1. -1 power 3 is -1. -1 a whole square is 1. Plus minus -1 plus 1. So that is +2 and second part is -2. So +2 -2 that is 0. हमें पता है कि अगर मैं x plus 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो ध्यान रखिए अगर रिमाइंडर 0 है, इन एनी केस आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल फॉर यू। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर कि कैसे इसको चेक करते हैं। देखिए कि क्या एज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, क्या 2 10 का फैक्टर है? देखिए 2 5s are 10 and remainder is 0. Whenever the remainder is 0, then divisor is the factor of the dividend. So yes, here remainder is 0. So you can write since remainder is 0, therefore x plus 1 is a factor of the polynomial x cube plus x square plus x plus 1. हर एक केस में अगर एक क्वेश्चन आता है कि ये फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहिए। रिमाइंडर 0 आएगा तो that will be the divisor will be factor, otherwise that will not be the factor of the given polynomial. सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हम अब चेक करते हैं। It is x plus 1 is a factor or not? We have to verify, we have to determine. So same thing है यहाँ पे भी। You find out the remainder, put remainder, for remainder के लिए आपको put करना पड़ेगा, put x plus 1 is equal to 0 और x is equal to -1.
So remainder is equal to minus 1 power 4 plus power minus 1 power 3 plus minus 1 power 2 plus minus 1 plus 1. जहां भी x है, you replace x by minus 1. That is 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. So that is 3 minus 2, that is 1, that is not equal to 0. Because the remainder is not equal to 0, that is why divisor is not the factor of the dividend. अगर आप इसको divide करेंगे तो ये x plus 1 इसका factor नहीं होगा. So therefore x plus 1 is not a factor of the polynomial, that is x power 4 plus x power 3 plus x power 2 plus x plus 1, and this is answer of this question. I think you have understood. ये बताना हो, ये वेरीफाई करना हो, ये पता लगाना हो कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है, आप रिमाइंडर फाइंड आउट करो. रिमाइंडर से आपको अगर ये 0 है तो फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है. X plus 1 is a factor of x, this x power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 or not. क्या ये इसका फैक्टर है? उसके लिए वही तरीका है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा और रिमाइंडर के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x plus 1 is equal to 0 और x is equal to minus 1. तो रिमाइंडर फाइंड आउट करिए. देखिए minus 1 power 4 plus 3 into minus 1 power 3 plus 3 into minus 1 power 2 plus minus 1 plus 1. Minus 1 power 4 is 1 plus 3 into minus 1 power 3 is minus 1 plus 3 into minus 1 power 2, that is plus 1 minus 1 plus 1. So 1 minus 3 plus 3 minus 1 plus 1. On further simplification, it is 3 and 3 cancel. This and this cancel. What is 1 left? And 1 is not equal to 0. So we can say that x plus 1 is not therefore x plus 1 is not a factor of the polynomial x power 4 plus 3x square, 3x cube plus 3x square plus x plus 1. And this is answer of this question. रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर फैक्टर है, अदरवाइज डिवाइजर फैक्टर नहीं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Determine x plus 1 is a factor of x cube minus x square, means this polynomial or not. The same way, find out the remainder. For the remainder, put x plus 1 is equal to 0 or x is equal to minus 1 to get remainder. देखिए फैक्टर है या नहीं है, या रिमाइंडर पे डिपेंड करता है. और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ता है. सो हियर वी आर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन द रिमाइंडर फर्स्ट. सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सो द रिमाइंडर विल बी, जहां भी x है वहां पे आप उसको -1 से रिप्लेस करिए. -1 power 3 minus as it is -1 power 2 plus root as it is, that is -1 plus root 2. बहुत ही सावधानी से सिंप्लीफाई करिए. देखिए -1 power 3 is -1, this minus as it is, and -1 power 2, that is +1. This minus and this minus we can write here plus
2 plus root 2, and that is root 2. Minus 1 and minus 1, that is minus 2, open the bracket, that is 2 plus root 2 plus root 2. Again, minus 2 and plus 2 cancel, but root 2 plus root 2 not cancel, that is twice of root 2. Root 2, square root 2 plus square root 2 is twice of square root of 2, but which is not equal to 0. That is why, therefore, x plus 1 is not a factor of this polynomial. And this is answer of this question. Remainder 0 होगा तो x plus 1 या जो whatever the polynomial is given, that divisor will be the factor, otherwise it will not be the factor of the given polynomial. Use the factor theorem to determine whether the polynomial gx, this gx is a factor of the polynomial px. क्या ये x प्लस 1 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है या नहीं है? इसके लिए हमें पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, पुट x is equal to -1. We get the value, the px is given 2x cube plus x square minus 2x minus 1, this is given. x को रिप्लेस करिए -1 से, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, प्लस -1 पावर 2 -2 into -1, so that is 2 into -1 plus 1 plus 2 minus 1, so that is -2 plus 1 plus 2 minus 2, that is 0. क्या रिप्लेस करने से मीन्स ये 0 आया है? देखिए, since p minus 1 is equal to 0, देखिए here, यहाँ पे x की जगह -1 रिप्लेस करने से 0 आया है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि therefore x plus 1 is a factor. Yes, क्या किया हमने? इस -1 को x plus 1 बना दीजिए. Whatever written over here, change the sign and put over here. X will be there. X तो यहाँ पे रहेगा. ये जो भी नंबर है उसका आप साइन चेंज करके यहाँ पुट कर दीजिए. x plus 1 is a factor. Yes. और दूसरा तरीका यह है कि हमें पता है कि the remainder is we know that the remainder is 0 here. क्या 0 आया? When we put x is equal to -1, remainder is 0. That is why x plus 1 is the factor of the given polynomial px, that is 2x cube plus x square minus twice of x minus 1. यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे और अगर इसके इक्वल 0 आता है तो उसका जो फैक्टर होगा वो होगा x and change the sign of this value. So yes, this is a factor of it. x plus 2 फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए देख क्या करेंगे. पुट x is equal to -2. So the polynomial is given x power 3 plus 3x square plus 3x plus 1. x को रिप्लेस करिए -2 से, so that is -2 power 3 plus 3 into -2 power 2 plus 3 into -2 plus 1. -2 power 3, that is -8,
plus 3 as it is, minus 2 square is plus 4, minus 6 plus 1. आप डिटरमाइन करें इसकी वैल्यू को, and you will find here that that is that is equal to minus 8 plus 12 minus 6 plus 1, that is equal to minus 1, which is not equal to 0. Therefore, x plus 2 is not a factor, or the polynomial gx is not a factor of the polynomial px, and this is the answer. यहाँ पे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रिप्लेस करें that should be equal to 0, but this value is not equal to 0. That is why this is not a factor. That's all. और इस मेथड को कहते हैं finding the zero using factor theorem. Next part. फैक्टर थ्योरम से बताइए कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, यस और नो, क्या ये इसका फैक्टर है? और उसके लिए देखिए ये x माइनस 3 है तो x की जगह पुट करेंगे हम 4, x इज इक्वल टू 3. The polynomial px is given x power 3 minus 4x square plus x plus 6. Replace करिए, you replace x by 3. 3 power 3 minus 4 into 3 power 2 plus 3 plus 6. 3 3 is a 9, 3 is a 27, minus 4, 3 square is 9, plus 6 plus 3, 9. So that is 27 minus 36 plus 9, minus 36 plus 36 is 0. So क्या रिप्लेस करने की वजह से देखिए x को जब when we replace x by 3, then the value of the polynomial is 0. That is why therefore x minus 3 is a factor of the polynomial px, and this is the answer of this question. Yes. ध्यान दीजिए जो भी ये वैल्यू होती है उसका हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देते हैं. x is as it is here, so x minus 3 is a factor of the given polynomial px, and px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6. Yes. So when you divide this px by gx, the remainder will be equal to 0. Find the value of k if x minus 1 is the factor of the polynomial px, that is x square plus x plus k. देखिए अगर x minus 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा. दिस इज द कंडीशन. तो रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना और रिमाइंडर के इक्वल 0 पुट करना है. सो व्हाट वी डू, पुट x minus 1 is equal to 0 or x is equal to 1 to get remainder. Polynomial ये px is given here, so that is x square plus x plus k. x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 1 and that will be remainder, और remainder के x की जगह 1 पुट करिए, that is 1 square plus 1 plus k, और that is 1 plus 1 plus k, or you can say k plus 2. So what is remainder? K plus 2.
लेकिन ये पहले से इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि x-1 इसका फैक्टर है, और फैक्टर होने का एक कंडीशन होता है कि रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए. बट हियर रिमाइंडर इज k+2, it means k+2 should be equal to 0. Therefore k+2 रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए. So the value of k will be -2, and that is the answer of this question. k का वैल्यू इस केस में -2 होगा. Find k if x-1 is a factor. ये पहले से इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर इक्वल टू होना चाहिए 0. और रिमाइंडर के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पुट x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 टू गेट रिमाइंडर. तो देखिए रिमाइंडर के लिए द पॉलिनोमियल रिमाइंडर विल बी x की जगह 1 पुट करिए, सो 2 into 1 स्क्वायर प्लस k as it is into 1 plus root 2. 2 into 1 plus k plus root 2. So k plus 2 plus root 2. ये हमारे पास इसका एक रिमाइंडर है. जब हम when we divide this x 2x square plus kx plus root 2 by the polynomial x-1, we get this remainder using a remainder theorem. But it is given ये फैक्टर है, और फैक्टर है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. तो अब हमें रिमाइंडर के इक्वल 0 पुट कर देना चाहिए. सो k plus 2 plus root 2 should be equal to 0, or the value of k should be -2 minus root 2 आंसर. ये k का वैल्यू आ जाएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आप चाहें तो ये माइनस आप इसमें कॉमन ले लें. यू कैन राइट लाइक दिस हियर, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर. सो k is equal to means minus common, then 2 plus root. Both are correct answer. This is answer. This is also the value of k. X-1 is already given the factor, and we have to determine the value of k. So we get it by the remainder theorem. You put x-1 is equal to 0 or x is equal to 1 to find out the remainder. Remainder find out करने के लिए x-1 की जगह 0 put करें. So the value of x will be 1. So when you replace this value in this polynomial, we will get remainder. अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू k as it is that is k minus root 2 plus 1. This is remainder, but the remainder should be equal to 0. Therefore k minus root 2 plus 1 should be equal to 0. So the value of k will be root 2 minus 1. So the value of k will be root 2 minus 1, and this is the answer of this question. Find k if x minus 1 is the factor of the polynomial px, and that is kx square minus 3x plus k. इसके लिए हमें पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रिमाइंडर को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट x minus 1 is the factor of this. रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे पुट x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1. So the remainder will be k as it is. In place of x, you replace x by 1 minus 3 into 1
plus k. That is k minus 3 plus k. So that is 2k. 2k minus 3. K plus k, see here, this 1k plus 1k, 2k minus 3, लेकिन रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाना चाहिए. Therefore, the remainder should be equal to 0. So 2k minus 3 should be equal to 0. So the value of 2k should be 3. So the value of k should be 3 upon 2. And this is answer of this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. I hope concept of factor theorem and factorization using factor theorem is clear to you, and keep watching. Thank you.